Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. आज टॉपिक करेंगे बैक ऑफ द नेक जो कि चैप्टर नंबर 10 है बीडी चौरासिया वॉल्यूम 3 का। अच्छा, बैक ऑफ द नेक का मतलब ये है कि गर्दन के पीछे कैसा। सो दिस इज द स्कल, ये नेक का बैक है। सो ये बेसिकली आज टॉपिक है, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे सिर्फ नेक रीजन में नहीं बल्कि और भी कुछ मसल्स हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे, उनके बारे में भी बात होगी। द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक प्रोवाइड्स अ मीडियन एक्सेस टू द बॉडी. The joints of the neck are already discussed. Chapter 9 हमने कर लिया है. Now there are some big muscles which start from the sacrum and they go all the way to the skull in different layers and they keep the spine straight. The uppermost part of the back of the neck is suboccipital region, यानी ये occipit के नीचे वाला region. That is the suboccipital region. नाम से ही ज़ाहिर है ना, suboccipital यानी occipit के नीचे. This region contains the suboccipital triangle containing the third part of the vertebral artery which enters the skull to supply the brain. If it gets pressed because of any reason, many symptoms may occur. Reason ये है कि vertebral artery is going straight to supply the higher centers in the CNS. तो back of the neck की बड़ी importance है और एक्चुअली पूरी बैक की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. इट्स अ मैकेनिकल पिलर ऑफ योर बॉडी जो आपकी बॉडी को मीडियन एक्सेस देता है. पूरा आपकी बॉडी का वेट बेयरिंग सारा सिलसिला, सोचो ना अगर स्पाइन ना हो तो क्या होगा यार. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. और सबसे पहले नर्व सप्लाई की बात करते हैं कि जो बैक रीजन है इसकी नर्व सप्लाई कौन कौन सी नर्व्स के थ्रू है. सो लेट्स टॉक अबाउट द नर्व्स ऑफ द स्किन. Skin of the nape or the back of the neck, इस एरिया को आप back of the neck भी कहते हैं, is also known as the nape of the neck. ठीक है. And of the back of the scalp is supplied by the medial branches of dorsal rami of C2. ये word आपको clear होना चाहिए. What do we mean by dorsal rami? So if we have the spinal cord here, there is a dorsal root, there is a ventral root, and they make the spinal nerve. फिर spinal nerve का there is a dorsal ramus and there is a ventral ramus. तो ये जो dorsal ramus है C2 का, ये सप्लाई करता है to this area जो कि back of the neck भी है और also it supplies the back of the scalp. Okay, dorsal ramus of C2. The greater occipital nerve इसका नाम है, and C3 जिसको हम कहते हैं third occipital nerve, उसका भी dorsal ramus. Each posterior primary ramus dorsal ramus divides into a medial branch and a lateral branch, both of which supply the intrinsic muscles of the back. The medial branch is in this region supplies the skin as well, and the dorsal ramus of C1 does not divide into medial and lateral branches and distributed only to the muscle bounding the suboccipital triangle. So ये cervical region number 1, cervical region number 2 and cervical region number 3, ये तीन nerves हैं जो supply करती हैं back of the neck को, जिसमें C2 और C3 जो हैं they supply skin as well as muscle. C1 is bound only to supply the muscles of the suboccipital triangle. इसकी हम अभी बात करेंगे. Triangle की importance ये है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, इसमें से vertebral artery गुजरती है. So that's why the triangle is of supreme importance. Okay. Then ligamentum nuchae is a triangular fibrous sheet that separates the muscles of two sides. So it's present in the midline. You see ligamentum nuchae, इसके right side और left side दोनों side पे muscles को ये separate करता है. It's a fibrous ligamentous band. It separates the two sides of the neck. It is better developed and is more elastic in quadrupeds in whom it has to support the heavy head. क्योंकि उनका head quadruped जो चार पांव पे चल, चौपाए जो चार पांव पे चल रहे हैं, उनका head ऐसे हर वक्त लटका हुआ है. तो यहाँ पे जो ligamentum nuchae है वो काफी support provide करता है. But anyways humans में भी होता है ligamentum nuchae, right? अच्छा, अब muscles की बात शुरू करते हैं. Muscles of the entire back can be grouped into the following 4 layers, starting from superficial to deeper planes. यानी सबसे पहले सबसे superficial layer की बात करेंगे, फिर उसके बाद नीचे जाते जाएंगे. तो 4 total layers हैं. The first one is the trapezius and latissimus dorsi, levator scapulae, 2 rhomboids. और अगर मैं आपको ये फिगर पे सारे मसल्स दिखाऊं, so let's figure them out. You see how big is this muscle? The trapezius muscle, the latissimus dorsi muscle, the rhomboids. ये सारे जो आपको muscles नजर आ रहे हैं, these are all called the most superficial muscles. Trapezius, the latissimus dorsi, and the rhomboids. So these are the superficial muscle. Trapezius and latissimus dorsi, as well as the rhomboids and the levator scapulae. All are the first layer of muscle. इसके अंदर फिर जो muscles और होंगे, they will be serratus posterior superior,
serratus posterior inferior and splenius. अब जो serratus posterior superior है, ऐसे नाम से जाहिर है ये superior region में ligamentum nuchae से निकलता है और T1 से T3 के spines पे जाके अटैच होता है. Elevation of rib इसका काम है, so it basically helps in the rib movements, ठीक है. और इसकी nerve supply है 2nd to 5th intercostal nerves. और जो serratus posterior inferior है, ये obviously inferior region of the spine से निकलेगा. T11 L2 vertebrae ये region T11 T12 L1 L2 vertebrae से निकलता है और 9th और 12th ribs तक जाके लगता है, 9th 10th 11th और 12th ribs तक, ठीक है. एंड इट डिप्रेसेस द लोअर लिप. सो इसकी काइंड ऑफ अटैचमेंट इस तरह से है कि जो पहला serratus superior serratus posterior superior है वो ligamentum nuchae से निकल के यहाँ इस तरह रिब्स पे लगता है एंड देन द serratus posterior inferior जो है वो लोअर स्पाइन से 9th 10th 11th 12th रिब्स तक जाता है. ये इनकी इस तरह की अटैचमेंट्स हैं. एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ लिप्स. देन स्प्लेनियस मसल जो है दे आर टू इन नंबर. दे आर स्प्लेनियस सर्वाइसिस और स्प्लेनियस कैपिटस. दीज कवर द डीपर मसल्स लाइक अ बैंडेज. तो इनका काम है डीप मसल्स को काइंड ऑफ एक स्लिंग की तरह, एक बैंडेज की तरह कवर करके रखना. सो स्प्लेनियस सर्वाइसिस, यू सी दिस इज स्प्लेनियस सर्वाइसिस एंड स्प्लेनियस कैपिटस. इनके अंदर फिर फर्दर डीपर मसल्स हैं और उन डीपर मसल्स का भी हम जिक्र करेंगे. सो जब थर्ड लेयर की बात करेंगे, और इससे पहले स्प्लेनियस सर्वाइसिस की जो नर्व सप्लाई है, इट गेट्स इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस C1 से C4 एंड दे आर सप्लाइड बाय द C1 टू C6 नर्व्स, ऑब्वियसली पोस्टीरियर रमाई या डॉर्सल रमाई. अच्छा, फिर जो थर्ड लेयर ऑफ मसल है दैट इज इरेक्टर स्पाइनी. दैट्स अ लॉन्ग मसल. सो इफ यू सी दिस इज द लॉन्ग इरेक्टर स्पाइनी मसल एट द बैक और ये इस सैक्रोइलियक रीजन से स्टार्ट होता है मसल और ऊपर जाकर इट डिवाइड्स इनटू 3 डिफरेंट स्लिंग्स. इट इज डिवाइडेड इनटू एन इलियोकोस्टालिस स्लिंग, इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पाइनालिस व्हिच गोज टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द अदर वन इज द longissimus. So erector spiny muscle is the real muscle of the back which provides support and it is supplied by the posterior rami of the spinal nerves. That's why it is also a true muscle of the back. It originates basically from the back of the sacrum और sacral crest से associated iliac crest से और आसपास जो ligaments है उनसे भी ये निकलता है और फिर ये डिवाइड होता है 3 different slings में, iliocostalis, longissimus and spinalis. बेसिकली इनकी लोकेशन के हिसाब से इतना हाइड स्टफ नहीं है कि आपको उस पर बहुत टाइम लगाना पड़े. अच्छा, फिर देयर आर सम अदर डीपर मसल्स व्हिच आर कॉल्ड सेमी स्पाइनालिस. नाउ सेमी स्पाइनालिस जैसा कि नाम से जाहिर है, इट is present only in half of the spine, therefore semi-spinalis. जो thorax region में है that is semi-spinalis thoracis, जो neck region में है वो semi-spinalis cervicis और जो base of the skull occiput के साथ join हो रहा है वो semi-spinalis capitis. So ये 3 तरह के semi-spinalis muscles हैं, thoracis, cervicis and capitis. Okay, again this is not very high yield stuff, बस ये नाम आपको पता होनी चाहिए muscles की location. यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया है अभी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से कि जो ट्रेपीजियस है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है, फ्रॉम द न्यूक्लियर लाइन. इन तमाम एरिया से वो ओरिजिनेट करता है. इट्स अ बिग मसल एंड इट इंसर्ट्स इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, मिडल फाइबर्स ऑफ द मिडल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस. और इसका जॉब क्या है, द एक्शन इज अपर फाइबर एलिवेट द बैक ऑफ द मसल के जितने भी अगर आप फंक्शन को जनरलाइज करो तो उसमें आइदर दे विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्पाइन, नंबर 2 दे विल बी स्टेबलाइजिंग स्कैपुला फॉर मूवमेंट, दे विल आइदर बी एलिवेटिंग स्कैपुला और डिप्रेसिंग स्कैपुला and they will either be working on ribs, so either elevating the ribs or depressing the ribs, that sort of stuff. So इनकी attachment के हिसाब से फिर आपको पता चलता है कि इनका function basically क्या होगा. So trapezius is basically a big muscle. You see, it's a big muscle, a lot of fibers. तो इसके फिर काफी सारे function भी उसी हिसाब से हैं, depend करता है आप किन fibers की बात कर रहे हैं. So अगर आप trapezius के upper fibers की बात कर रहे हैं, so they will elevate the scapula. Middle fibers की बात कर रहे हैं, along with the rhomboids, they retract the scapula backwards. और अगर upper and lower fibers with serratus anterior के साथ वो काम करेंगे, then they will help in abduction of the arm ऊपर उठाने में बियॉन्ड 90 डिग्री. यानी अगर ये बंदा खड़ा हुआ है तो ये 90 डिग्री हो गया, इससे ऊपर भी अगर आर्म उठाना है जैसे ऊपर हाथ करके क्लैप करते हैं तो दैट इज द जॉब ऑफ ट्रेपीजियस अलोंग विद serratus anterior. इसी तरह latissimus dorsi है, इसका एक्शन है एडक्शन. एक्शन ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए जब ये हम मसल्स के जब हम ये एक्शन ऑफ मूवमेंट्स पढ़ रहे थे कि एडक्शन क्या है. सो आई टोल्ड यू latissimus dorsi इज इंपॉर्टेंट. तो गो थ्रू दिस टेबल.
नॉट सुपर हाई यील्ड। रोम्बॉइड्स का दोनों का काम एक ही है, दे रिट्रैक्ट द स्कैपुला। नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। लिवेटर स्कैपुली, इसका तो नाम ही है लिवेटर, इट एलिवेट द स्कैपुला। स्कैपुला का एलिवेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर स्कैपुला एलिवेट नहीं करेगा तो बहुत सारी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो इफ स्कैपुला इज नॉट एलिवेटिंग तो एबडक्शन का जो यहाँ पे अपर लिम्ब अटैच होगा ना, तो उसकी एबडक्शन में बड़ा प्रॉब्लम आता है। देयरफॉर नेचर हैज प्रोवाइडेड यू विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट मसल सेट्स जो स्कैपुला की पर्टिकुलरली एलिवेशन करते हैं। ओके, तो ये मसल्स के नाम हैं, उनके ओरिजिन, इंसर्शंस और उनके एक्शंस। देन द फोर्थ लेयर, these are also some smaller, deeper muscles such as multifidus, rotators, interspinalis, intertransferiae, and suboccipital muscles. These are muscles which provide support and slight movement of the structures of the back. So, for example, if you look here, these small muscles horizontally arranged, these are intertransversi muscles. Okay, then these are levators, posterum muscles. So they also help in elevation of the lips. So all these muscles are present at the back, arranged in 4 layers, starting from the outermost layer, which was the trapezius and latissimus dorsi, also the rhomboids and the levator, and then you go deeper and deeper and deeper. Second layer में आप देखते हैं कि एक sling है, splenius cervicis, splenius capitis की, और इसके अंदर third layer and fourth layer. So they are all the muscles which either provide support to your back or do some movement such as scapula की movement, ribs की movement. ठीक है? अच्छा जी, अब suboccipital region. Suboccipital region कहते किसको है? It is basically, you know, between the occipit, जो कि ब्रेन का ये नीचे वाला हिस्सा है ना, पीछे से अगर देखें, नॉट ब्रेन यार, आई एम सॉरी, स्कल का जो नीचे वाला हिस्सा, ऑक्सिपिट, ओके, एंड द स्पाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द वर्टिब्रा। द 4 मस्कुलर लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे भी 4 लेयर्स हैं, ट्रेपेजियस, स्प्लेनियस कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस एंड लॉन्गिसिमस कैपिटस, एंड द 4 सबऑक्सिपिटल मसल्स। ये 4 लेयर्स particularly is suboccipital region के muscles हैं. So if you look at the diagram here, this is the occipit region. पोस्टीरियर साइड से आप देखें तो बेस ऑफ द स्कल, ये मेस्टोइड एंट्रोमेस्टोइड प्रोसेस है, ये बेस ऑफ द स्कल है, और ये स्पाइन ऑफ द एक्सिस है। तो ये जो पूरा रीजन है बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द स्पाइन ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रे, ये पूरा रीजन गर्दन का, यानी गर्दन को पीछे से यार सिंपली अगर आप देख रहे हैं, somebody is standing like this, और ये आप उसको पीछे से देख रहे हैं, ये उसके खोपड़ी का पिछला हिस्सा है, तो ये जो नेक रीजन है, all that region is known as the suboccipital region. और इसमें 4 मस्कुलर लेयर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ट्रेपेजियस, स्प्लेनियस कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस एंड लॉन्गिसिमस, एंड 4 सबऑक्सिपिटल मसल्स। इस एरिया में जो आर्टरीज हैं इन द बैक ऑफ द नेक, दे आर ऑक्सिपिटल डीप सर्वाइकल, थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी व्हिच विल गो इन टू द स्कल एंड इट विल सप्लाई द ब्रेन, and then there are minute twigs from the second part of the vertebral artery. So ये diagram में यहाँ demonstrated भी है. If you look at this diagram, you see the occipital artery here. This is occipital artery. You see the main vertebral artery का third part. So these are the main blood vessels present in this suboccipital region. It's very important. Any compression in this region will have compromised supply to the brain. Then the suboccipital venous plexus is known for its extensive layout and complex connections. Important, important, important. Suboccipital muscles मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर ये सारे टेबल पे बने हुए भी हैं. So these suboccipital muscles which are 4 in number, और उनके नाम हैं rectus capitis posterior major, rectus capitis posterior minor. तो ये 2 नाम याद रखना आसान है. Then obliquus capitis superior and obliquus capitis inferior. तो अगर एक आपको याद है, दूसरा आप याद रख सकते हैं. There's a posterior major and minor, and then superior and inferior. So pretty tricky, टाइम तो लगाना पड़ेगा याद करने में, but that's what it is. इनका ओरिजिन कहाँ से है? Some is arising from the spine of the axis. For example, rectus capitis posterior major. Again, if you go to the diagram, this is the spine of the axis, and you need to locate where is the rectus capitis posterior major. So the rectus capitis posterior major is the more lateral muscle, this one. और इससे जो थोड़ा सा medial है, that is rectus capitis posterior minor muscle. Okay, it is arising from the posterior tubercle of atlas. So यहाँ पे इसका origin लिखा होगा posterior tubercle of atlas, और इनका insertion है rectus capitis posterior major का lateral part of the area below the nuchal line पे जाके attach हो रहे हैं. So they are arising from either the spine of axis or the tubercle of the atlas, and they are going towards the nuchal line, जो skull पे nuchal lines हैं, right? So they are going to attach on the nuchal line. There are superior and inferior nuchal lines, so ये inferior पे attach होते हैं. Nerve supply by C1 का dorsal ramus, and इनका function क्या है जनाब? The function is mainly postural.
slight extension of the head as well of rectus capitis posterior minor extension, but mainly postural, so it maintains the posture. इसी तरह जो posterior major है उसका function भी mainly postural है. Acting alone it turns the chin to the same side. That's a function that you should remember. Acting together दोनों side के muscle they extend, so extension of the head in दोनों muscles का basically काम है. And postural job मतलब they maintain the posture. अच्छा जी, अब obligus capitis superior and inferior ये दोनों atlas और axis से निकलते हैं. Superior arises from the transverse process of atlas and inferior arises from the spine of axis. So if you look at this diagram, this is the spine of axis, this is inferior oblique capitis, obligus inferior capitis. So this is arising from the spine of axis, and then we have superior oblique capitis. This is arising from atlas. Okay, so this is going towards the nuchal line, और ये वाला तो जाके attach हो रहा है towards the atlas, transverse process of atlas. So the inferior is arising from the axis and attaching on the atlas. The superior is arising from the atlas and going to the nuchal line of the skull. And their job is also postural and some extension as well as flexion of the head. So these are all the suboccipital muscles. Suboccipital muscles पूछते हैं एग्जाम में अक्सर, 4 ही हैं तो यार याद होने चाहिए. Exposure of suboccipital triangle, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज वगैरह क्या है. तो आइए इसको देखते हैं. What is suboccipital triangle? In order to expose the triangle, the following layers are reflected. Obviously सबसे पहले skin, then superficial fascia. Superficial fascia में कुछ nerves आएंगी, arteries and veins. Then fibers of the trapezius, because that's the outermost layer of the muscle. The sternocleidomastoid may overlap region laterally. Then you get splenius capitis, then semispinalis capitis, and longissimus capitis. This is how you enter into the suboccipital triangle. So point ये है कि जब आप suboccipital triangle की dissection कर रहे हैं तो सबसे पहले आप skin हटाएंगे, superficial fascia आएगा वो हटाएंगे, फिर trapezius ने आना है, sternocleidomastoid के fibers ने आना है, इन सारे muscles ने आना है, ये हटा के you will reach the suboccipital triangle. और जब उस triangle पे आएंगे तो फिर आपको उसकी boundaries पता होनी चाहिए वो क्या है. That's pretty easy. Superomedial जो इसकी boundary है, that is by rectus capitis posterior major as well as rectus capitis posterior minor. So if you look at the diagram, first of all identify where is the medial stop. This is the medial, this is the lateral, because this is mastoid antrum. तो ये medial होगा, ये इस तरफ का mastoid antrum यहाँ पर होगा. So these are the lateral extremes, this is the midline. ये midline वैसे भी है, देखो ना, spine of axis vertebrae इधर है, तो ये midline ही है, this is the midline. Now superomedial will be this area, this is the superomedial area. Now when we say the superomedial area, तो superomedial area पे अब आपको locate करने हैं दो important muscles, which are rectus capitis posterior minor. So where is rectus capitis posterior minor? This muscle. And then where is rectus capitis posterior major? This muscle. So these are forming the superomedial boundary of the suboccipital triangle. Okay, now that's the superomedial boundary. The next boundary that you need to know is the superolateral boundary, which is by superior oblique capitis muscle. This is the superior oblique capitis muscle, and this is superolateral boundary. एक boundary ये हो गई, superomedial boundary, एक boundary ये हो गई, superolateral boundary. अब रह गई inferior boundary. Inferiorly, it is bound by inferior oblique capitis muscle. So ये triangle इधर बन रहा है, देखो suboccipital triangle. अब अगर मैं बना के दूं आपको, so that is the suboccipital triangle, जिसकी एक superomedial boundary है, superolateral boundary है और inferior boundary है. ठीक है, so these are the contents of the triangle. अब roof, medially there are dense fibers of the semispinalis capitis, because इनको हटाकर आप इसमें enter हुए थे, so that lies at the roof. Laterally there is longissimus capitis also in the roof. Okay. फ्लोर में क्या है? पोस्टीरियर आर्चेस ऑफ द एटलस, यानी जब ये सब आप ट्रायंगल में पहुंच गए, जब आप पीछे देखेंगे तो यहाँ आपको जमीन पर इसकी फ्लोर पर क्या नजर आ रहा है? पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस, यानी डीप स्ट्रक्चर क्या है? पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस. यू आल्सो सी द पोस्टीरियर atlanto-occipital membrane, which is this green bit, posterior atlanto-occipital. So if you look at this diagram, it explains all the concepts very clearly. Okay, we are now looking at the triangle, और उसके फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं? पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस है और ये मेम्ब्रेन है, which is the posterior atlanto-occipital membrane. ठीक हो गया. अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट. डॉर्सल ramus of C1, which is also called suboccipital nerve, and suboccipital plexus of vein. So you look here, veins इसमें नहीं दिखाई हुई, but इसमें dorsal ramus of C1 clearly दिखाया हुआ है, और vertebral artery. So these are the very important components. यहाँ पे venous जो occipital plexus है वो नहीं दिखाया हुआ, but that is also one of the content. Okay.
वर्टिब्रल आर्टरी जो है, इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. इस पूरे का बॉटम लाइन ये है पैराग्राफ का कि वर्टिब्रल आर्टरी गोज एंड सप्लाइज द ब्रेन. If the vertebral artery is blocked in the region of the suboccipital triangle, the blood supply to the brain will be disturbed. That's the point, okay? Dorsal ramus of the first cervical nerve, it emerges between the posterior arch of the atlas and the vertebral artery and soon breaks up into various branches. As you can see here, there are so many branches here, and these branches also communicate with the neighboring branches. So that's an important content of the suboccipital triangle and the venous plexus. It lies in and around the suboccipital triangle and drains the muscular vein, the occipital vein, the internal vertebral plexus, the condylar image. So there is a lot of connection and tributaries which are draining into the suboccipital venous plexus. Other related structure: greater occipital nerve, third occipital nerve, occipital artery. These are also important components. So if you look at this diagram here, you will find, communicating branch to greater occipital nerve, some other branches, some other arteries such as occipital artery. They are also in relation to the suboccipital triangle. They are all also very important. So for example, greater occipital nerve, it is the large medial branch of the dorsal ramus of the second cervical nerve, C2. It is the thickest cutaneous nerve in the body. It's an important point. If somebody asks you which one is the thickest cutaneous nerve, so it's the dorsal ramus of C2, known as the greater occipital nerve. नाम में greater है तो thickest होगी ना. It winds around the middle of the lower border of the ear. ये सब important नहीं है, so just don't worry about it. Third occipital nerve is the dorsal ramus of C3. ठीक है. After piercing the semi-spinalis cavity, again not important. Occipital artery is branched from the external carotid artery. यहाँ पे भी कोई डिटेल ज्यादा लिखी भी नहीं, बस इतना है आपको याद रखना कि occipital artery is also occipital artery, C2 का ramus, C3 का ramus, they are all C1 का ramus, they are all in connection with the suboccipital triangle. Okay. Right, Janab. अब क्या रह गया Janab now? So that is not the topic here because we are not talking about the supply of the occipital arteries. Not the topic here. And deep cervical artery is also branched from the costocervical trunk. यहाँ mention करने का purpose ये है कि they are in relation with the suboccipital triangle. Not that we are studying the root of this artery. Okay. Now, clinical anatomy. Neck rigidity is a very, very common stuff seen in meningitis. So if there is inflammation of meninges, this is a very, very common finding, neck rigidity. ठीक है? It is due to the spasm of the extensor muscles of the neck. अभी आपको जो सारे muscles बताया ना, 4 layers में neck के muscles हैं जो आपने याद रखने हैं. मैं neck के muscles की back of neck की बात कर रहा हूँ. उसमें trapezius है, splenius capitis है, semi-spinalis capitis and longissimus capitis है, और फिर ये 4 muscles हैं. These are the deepest one. ऑक्सीपिटल जो सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं, the 4 suboccipital muscles जिनके नाम हैं rectus capitis posterior major, minor, obliquus capitis superior and inferior. ये सारे मसल्स जो हैं they go spasmodic. इसकी वजह से neck pain होता है. This is caused by irritation of the nerve roots during their passage through the subarachnoid space because meninges inflamed है ना, तो ये nerves भी inflamed उसके गड़बड़ में आ जाती हैं और they start causing irritation and pain. Now, cisternal puncture is done when lumbar puncture fails. ये सुने जरा. The patient either sits up or lies down in the left lateral position. A needle is introduced in the midline above the spine of axis vertebrae in forward and upward direction parallel to the imaginary line extending from the external acoustic meatus to the nasion. It passes through the posterior atlanto-occipital membrane. Between the posterior arches, the needle enters the cerebromedullary cistern and a small amount of CSF is drawn. It's more technically demanding और इसमें स्किल ज़्यादा चाहिए. और अगर गलती से आपने सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में नीडल उधर कर दी तो फिर वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए जिनके साथ आप डैमेज कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल आर्टरी में अगर कोई गड़बड़ हो गई, वो फट गई, रप्चर हो गई, पंक्चर हो गई. बट एनीवेज दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर्स व्हिच इज डन व्हेन द लंबार पंक्चर फेल्स. ओके, राइट. I love sunshine. यार ये I'm not a mnemonic guy क्योंकि mnemonics को याद रखने के लिए याद रखना पड़ता है कौन सा mnemonic है किसका. क्वेश्चन एक देखते हैं यार. A child aged 8 years has been having high grade fever with bad throat. On 4th day he could not move his neck. Meningitis. Why is the pain even drinking water and how has it become such a serious condition? Due to bad throat, infection from the pharynx reached the middle ear via the pharyngotympanic tube from where it infected the meninges in the brain. So meningitis हो गया. This is a serious condition.
It is called meningitis. The child shows neck rigidity. It is due to the spasm of the extensor muscles and irritation of the nerves. Therefore, the person is having neck rigidity. Passive flexion of the neck and straight leg raising test result in pain in the nerves. ये हमको पता है, ये different signs हम clinics में पढ़ते हैं, अभी इस वक्त टॉपिक नहीं है. So the point is कि छोटा सा बच्चा sore throat हुआ और meningitis हो गया. So that is the clinical scenario. ये clinics में इस तरह आते हैं भाई केसेस कि पेशेंट आया है, छोटा सा बच्चा रो रहा है, धो रहा है, आप हिस्ट्री ले रहे हैं, पता चला थोड़े दिनों पहले इसका गला खराब था. You have to then link different stuff together. Okay, so that was a very short, crisp but very important chapter. Okay, चलो अब आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में. अपना ख्याल रखना.